Today in this video I am going to explain the idiom a hard pill to swallow. A hard pill to swallow means something, especially a fact or piece of news that is unpleasant or difficult, which is unavoidable or must be accepted. ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई न्यूज़ जो बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, बट उसको एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए अ हार्ड पिल टू स्वॉलो ये इडियम यूज़ कर सकते हैं. इन IELTS एग्जामिनेशन यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन. ऐसे टाइप में प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है जो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वेदर इट इज़ चाइल्ड लेबर, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, क्राइम, लाइक दैट. इन दैट यू कैन यूज़ दिस ईडियम. आप जितने ज़्यादा ईडियम यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपके IELTS के बैंड इंक्रीज हो सकते हैं. For the Duolingo test, I can say that whether you are having any kind of question regarding fill in the gap, और उस fill in the gap में आपको हाफ पोर्शन दिया गया होता है और एंडिंग पार्ट आपको खुद से फिलअप करना होता है. इफ़ यू आर अवेयर अबाउट सर्टेन टाइप ऑफ idiom and preposition or collocations, then it will be very easy to fill up the gaps easily. Okay, now here I have given the example. Very first one is that this COVID-19 situation is hard pill to swallow for me, as I still feel like it's a nightmare but not the reality. As we know कि पूरा वर्ल्ड आज फेस कर रहा है इस सिचुएशन को, और बहुत बार ऐसा होता है दैट वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ इम्पेशेंट, और ये लगता है कि सच में ये हो रहा है या इट्स लाइक अ ड्रीम. तो ये सेंटेंस में मैंने ये फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है. Again I say, this COVID-19 situation is hard pill to swallow for me, as I still feel like it's nightmare but not the reality. Second one, it's hard pill to swallow that we have damaged the whole ecosystem and now we have to be ready to face the circumstances. Here this type of sentence you can use in your problem question regarding ecosystem, pollution, environment, like that. Okay. Last one, his recent breakup with Janvi was a hard pill to swallow. This is the common personal sentence which is kind of breakup situation is mentioned here. Okay, I hope you understand the idiom and its meaning and how you can utilize in your speech and in your essay. If you like the video, please like and share. Thank you. Have a good day.